Hello everyone, welcome to our YouTube channel Pharma Job Alert or Pharma Alert. Today in this video, we're going to see a very important notification. So this is an opening regarding assistant pharmacist, sub-inspector pharmacist, as you have seen already in the thumbnail. So let us see in detail. So this was released to this month, 21st of this month. So here you can see advertisement number, Office of the District General, Shastra Simabal, East Block, RK Puram, New Delhi. So online applications invite कर रहे हैं for the post of assistant sub inspector pharmacists and some other vacancies. Let us see कितना वैकेंसी है फार्मासिस्ट का. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट दो वैकेंसी है, टोटल वन अनरिजर्व वैकेंसी है, वन वैकेंसी पर एसटी शेड्यूल टाइप. सो आप लोग इधर देख सकते हैं पे स्केल क्या है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर. So, and in which radiographer, pharmacist, operation theater technician, dental technician, level 5, 29,200 to 92,300. So, coming to the eligibility conditions for the post of assistant sub inspector pharmacist, age between 18 and 27 years. 12th पास होना चाहिए, diploma in pharmacy with 2 साल from a central government or state government shall be registered as a pharmacist under the Pharmacy Act 1948. And आप लोग को मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 1 year एक्सपीरियंस इन ए minimum 100 bedded hospital or institution recognized by the central government or the state government. So coming to the mode of examination, there will be first stage is physical standard test. Here you can see. So you how to apply for this opportunity? You can apply for this opportunity by visiting the SSB official website, and here you can see the payment fee payable and mode of payment. Unreserved EWS OSC category will require to pay examination fee amounting to 100 rupees only, non-refundable. So these are the important things you need to have at the time of applying, and please go through all these. Next, you need to upload a photo and signature also, and part 3, mode of payment, proof of candidature. So selection process, yes, this is what we are talking about. हम इसके लिए बात कर रहे हैं. First one is physical standard test. Phase 1 will be conducted at SSB locations. Physical standard test, candidates who qualify in the physical efficiency test will have to undergo physical standard test. सो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर फॉलोइंग. इधर देखो सबका कैटेगरी वाइज क्या क्या चाहिए वो सब क्लियरली बताइए. इधर है, आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं. एंड स्टेज 2 ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज ए रिटन एग्जामिनेशन विच कंसिस्ट ऑफ ए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. पार्ट 1 50 मार्क्स के लिए जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी. पार्ट 2 100 मार्क्स है टेक्निकल सब्जेक्ट. Minimum qualifying marks will be for general, EWS, OBC and XSM 50%, for SC and ST 45%. सो ये रिमाइनिंग चीज़ हम एग्ज़ाम होने के बाद बात करेंगे. सो वंस एडमिट कार्ड आया तो अभी मैं बताता हूँ. आप जो लोग सेलेक्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया, उसको पहले एडमिट कार्ड आता है. एडमिट कार्ड के बाद स्टेज 1 सिलेक्शन प्रोसेस, बाद में स्टेज 2 सिलेक्शन प्रोसेस. सो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस एंड this is the type of form of caste certificate to be provided by OBC candidates. Form of certificate will be provided by candidate belong to scheduled caste or scheduled tribe. Income and assess certificate to be provided by economically weaker sections. So this is the photograph, acceptable photograph. वो सब चीज़ देखो. आपको डिटेल्ड चाहिए तो मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ. एक्सेप्टेबल सिग्नेचर्स. धन्यवाद आप सब लोग का, इधर तक वॉच किया आप सभी लोग. धन्यवाद, डेली सपोर्ट कर रहे हैं हमारा चैनल को.